आपको ये बताना चाह रही थी आज के हमारा आज का टॉपिक था कि विविंग कैसे होती है। विविंग क्या होती है? विविंग जो है वो कपड़े की जो बुनाई होती है जिसे हम ताना बाना बोलते हैं वो होती है। तो आज हम वही चीज जो है पेपर के ऊपर बच्चों को सिखा रहे हैं कि ये जो डिजाइन बना हुआ है ये बेसिक विविंग है। हमने पहले 0.5 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स कट की हैं इस तरह, ये एक पेपर पे। फिर हमने दूसरे कलर की पेपर की स्ट्रिप्स कट की हैं और उसको जो है एक छोड़ के और एक वीविंग की है हमने इसके साथ। ये भी हमारी बेसिक वीविंग है। इसमें भी हमने टू कलर्स के साथ वीविंग की है। एक स्ट्रिप छोड़ के दूसरी वीविंग में हमने ताना बाना किया है। उर्दू में इसको हम ताना बाना बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको वीविंग बोलते हैं। तो इसी से हमारा कपड़ा बनता है। जब धागे की बुनाई होती है तो वो यही प्रोसीजर होता है। टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में जो काम होता है वो इसी तरह होता है। जो हमारे फैब्रिक, ये हमारा डिफरेंट डिजाइन है कि इसमें हमने ये पहले बेसिक है, देन उसके बाद ये एक इस तरह का ब्रिक डिजाइन बनाया हुआ है। ब्रिक डिजाइन में ये उस तरह दूसरा तीसरा डिजाइन है कि दो स्टेप छोड़ के फिर एक स्टेप है, कलर है, फिर इस तरह कपड़ा बनता है। इसी तरह हम ये पेपर के ऊपर वर्क कर रहे हैं। इसमें ये भी हमने दो डिजाइन दिए हैं, ये डिजाइन अलग है, ये डिजाइन अलग है, ठीक है। और ये हमारा इसमें हमने ये चेक प्रिंट बनाया है इसमें टू कलर्स के साथ, एक स्ट्रिप छोड़ के एक स्ट्रिप हमने अब हम आपको दिखाएंगे कि बच्चे जो काम कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं। ऐसे भी डिजाइन बनता है।